Assalamu alaikum. I am Fatima Zahra from BBA6. The research question that I have chosen for my documentary is what are the benefits of coeducation in the long run, along with the discussion of pros and cons of it. I will start with discussing about what coeducation is and how it can solve the issues causing barriers to education of girls. Education system plays an important role in making the world a civilized place to live in. It is the fundamental right of every individual. The societies that have worked on their education have succeeded in every field of life, where man and woman are provided with equal opportunities for education. Coeducation is a system in which boys and girls study in the same institution and work on their goals. Talking about Pakistani society, this country has diverse cultures and traditions and faces some serious problems against education. During this time, the problem is usually faced in tribal areas where they are living according to their customs and traditions, and the ratio of educated girls is much less than the ratio of educated boys. Comparatively, Punjab is at a better place, but in KPK, Balochistan or Sindh, it is still a problem. There are some areas where girls are allowed to study, but there are not enough schools or colleges for girls. Also, they are not allowed to be in boys' campus to study together. But this issue can be resolved by creating an awareness in these areas by explaining the fact that education is important for everyone. Nations can only become successful when education is taken into consideration for both genders, men and women. And developing countries like Pakistan still needs to work on it. Women plays an important role in every field of life, so it is necessary to understand that they have right to get education from both social and religious factors. Some of the tribal people hesitate to let their daughters study because they feel unsafe letting the girls study in the different environment, but it can only be solved by setting an example of how co-education can help improving space for boys and girls both in the same place and building respect for each other. If these things are taught to every student at early stage can lead to a better human for future. Though nowadays many private school colleges are providing co-education, but poverty can also be the reason that parents cannot afford the expenses of college or school, and as government girls campuses are few in numbers, they can be taught in the same institution as boys to give them the right of getting education. Due to co-education system, both boys and girls can learn together and can develop a personality which can be designed or redesigned through the time. Co-education is also important because it awakens the spirit of equality among all the students without any discrimination. Following are the reasons why co-education should be promoted from the start of education cycle, which will eventually help them in long run. Number one, if both genders are put in the same environment, there is a good possibility that they will adapt disciplined language, proper way of dressing. Number two, this will help both the genders to respect each other's self-esteem, build confidence, and helping each other. Number three, a healthy competition helps them to face failure in life and learn from it by nurturing them with challenges in a respective way. By looking at every angle, every kind of education has its pros as well as cons. Following are the disadvantages usually faced at this time. Number one, if arguments between them are not resolved in a proper manner, this can result in diversion of study from them. Number two, in teenage years, the students are in their way of choosing a career path, but due to psychological changes, they get easily attracted to opposite gender, which is a distraction in their practical life. Number three, various factors like harassment, bullying can happen in these institutions, which leads to psychological problems of the student. These issues can only be resolved by providing them with the right education from the start to teach them to respect each other no matter what. एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन इन लॉन्ग में देखें जनाब, इसमें को एजुकेशन की डेफिनेटली एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ चूँकि आपका क्वेश्चन एडवांटेजेस पे है, तो हमें एज अ टीचर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट मिलती है, फीमेल्स की सूरत में भी और मेल स्टूडेंट्स की सूरत में भी। और अगर मैं इसको देखूँ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, तो एट द सेम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा उनका भी डाइवर्सिफिकेशन होती है, ज़्यादा लोगों से उनका मेल मिलाप होता है, जो डेफिनेटली सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स भी हैं। तो इस चीज़ को डेफिनेटली हर बंदे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोग इसे नेगेटिवली भी अप्रोच करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको तस्वीर का जो है रोशन पहलू देखना चाहिए। और इसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स और डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज और डाइवर्सिटी इन सोशल लाइफ आपको मिलती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देखें तो आई थिंक इट्स बेटर कि को एजुकेशन होनी चाहिए। और वैसे भी जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्स ऑलवेज हमेशा की तरह कम ही रहे हैं। पिछले 70 सालों से हम सुन ही रहे हैं कि इकॉनमी बुरे हालात में है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी कि वो अलग से यूनिवर्सिटीज़ बनाए हुए फीमेल के लिए। तो इसलिए अभी
ऑप्टिमिस्टिकली अगर हम सोचें तो इट्स अ गुड थिंग डाइवर्सिटी के हवाले से, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो अगर आप नेगेटिव होकर सोचेंगे और अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी तो वो उसके उस हवाले से डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली मौजूद हैं, लेकिन हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और अस्सलाम वालेकुम, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। माई से फ्रॉम एससी डिपार्टमेंट। सही है, आपसे क्वेश्चंस करूँगी, आप उसका आंसर कर दें। सबसे पहले आप क्या समझती हैं कि कोई एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट? हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कोई रीज़न? जब आप स्टार्ट से ही आपको पता हो कि आप एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आ जाता है, गर्ल ने कैसे बॉय को एक रिस्पेक्ट देनी है, बॉय ने कैसे गर्ल को देनी है, एक एनवायरमेंट में कैसे रहना है, ना कि आप यूनिवर्सिटी लेवल में आए फिर आपको बताया जाए कि आपने एक दूसरे को पॉइंट नहीं करना। ये चीज़ स्टार्टिंग में ही आपको पता होगा कि आपने कैसे इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक स्टार्ट से ही होनी चाहिए। सही। इन योर व्यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोएजुकेशन इन द लॉन्ग रन? आई थिंक द बेनिफिट्स आर अगेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और एक इन्वायरमेंट, एक वर्किंग प्लेस बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, तो आपको सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में रह के काम नहीं करना होता। अगर आप अपना लॉन्ग रन करना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनीज को या मतलब यूनिवर्सिटीज में ही देख लो, तो आपको एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम करना है, तो उसके लिए आपको। अच्छा, आपने पहले कोएजुकेशन में पढ़ा है या नहीं? सही है। और हाउ कोएजुकेशन हैज़ बेनिफिटेड यू? यार मतलब ये ना आपकी इन्हेंसमेंट करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। अब पहले ये होता था कि मैं कभी भी मतलब को एजुकेशन में नहीं पढ़ी, और जब मैं यहाँ पर आई ना तो मैं थोड़ा सा डरी सी रहती थी कि यार मैं ये बात करूँगी इस लड़के को बुरी ना लगे, या मैं क्लास में बैठी हूँ, मैं टीचर से क्वेश्चन भी ठीक तरीके से नहीं कर सकती थी कि अगर मैं ये पूछूंगी ना तो क्लास मेरे पे हंसेगी। लेकिन मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये मतलब इन चीज़ों का एहसास हुआ कि यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और इसके मुकाबले में उन गर्ल्स को देखती थी जो को एजुकेशन से पढ़ी होती थी, तो वो ज़्यादा इस तरीके को या अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करती थी। तो आई थिंक ये यहाँ पे आके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मेरी बॉडी लैंग्वेज में चेंज हुआ है। पहले तो मुझे ये होता था कि मैं अगर मैंने प्राइवेट सफर करना होता था ना, मुझे उस चीज़ में भी डर लगता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आई थिंक ये यूनिवर्सिटी, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है को एजुकेशन का, इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं मोहम्मद दानियाल, मैं कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से बीबीए कर रहा हूँ। सही है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। सही है। और आपने पहले कोई एजुकेशन में पढ़ा हुआ? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, एकेडमी में मैंने पढ़ा था। सही है। अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चंस करूंगी, आप उसका आंसर कर दें। सबसे पहले, इन योर व्यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोएजुकेशन इन द लॉन्ग रन? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है हमारा, ताकि बाद में हम उनसे इंटरेक्ट कर सकें और आराम से मतलब अपना जो काम पूरा कर सकें। सही है। और हाउ कोएजुकेशन हैज़ बेनिफिटेड यू? को एजुकेशन बेनिफिट इस तरह की है कि लड़कियों से इंटरेक्ट करना ईजी है, बंदा शाय नहीं होता, उसका काम आराम से। सही। माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश, आई एम करंटली स्टडिंग बीबीए सेकंड सेमेस्टर। ओके, तो मेरे ख्याल में जो बेनिफिट्स हैं को एजुकेशन के, एज आई एम गोइंग टू परस्यू बैंकिंग इन माय फ्यूचर, सो मेरे ख्याल में जो को एजुकेशन का हमारे लिए, हमारी जो फील्ड में, प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि हमें मेल को भी डील करना होता है, फीमेल को भी डील करना होता है, एज वी आर गोइंग टू मैनेजर्स और मैनेज समथिंग। तो बैंकिंग में हमें ये बहुत बेनिफिट देगा, और मेरे जहाँ तक ख्याल है इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। My name is Abdul and I'm from PS Statistics Department and Chemistry. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर कर दें। इन योर व्यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोएजुकेशन इन द लॉन्ग रन? Okay, benefits of co-education. यही benefits होते हैं कि जब आप एक और यूनिवर्सिटी में आते हो तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और आपको दूसरे जो एक आपका अपोजिट जेंडर है उससे इंटरेक्ट करने में आसानी होती है, और आप जो है दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो, और आपकी थोड़ा सा जो सोच है वो ब्रॉड होती है। Considering all the responses from these interviews, I will conclude my documentary by saying that coeducation work as an important role in building confidence in both gender and respecting each other's point of view, which eventually can help them in professional life. The system act as a fit to survive in this diverse nature environment. That's all from my side. Thank you.